मार्केट से किताबें गायब नहीं हो रही, और किताबें जल्दी लेने से आप जल्दी नहीं पढ़ पाओगे या ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे. जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट एंड अप बीइंग ए कंटेंट कलेक्टर. यू आर हियर टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. Major problem or the trap that the students face basically is resource hoarding. Okay, remember that you are here to become a district collector. You should not end up being a content collector. Abhi, the moment we start preparation, what happens is that you keep on accumulating anything or everything. आपको हिस्ट्री की जितनी पॉसिबल किताबें हैं सब खरीद लोगे, सारे पीडीएफ डाउनलोड करके रख लोगे, सारे कोचिंग का मटेरियल एक साथ एक जगह पे लाके रख दोगे, सब टॉपर्स की कॉपी आप एक जगह पे लाके रख दोगे. नाउ व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली टाइम तो लिमिटेड है, रीड आपने कुछ नहीं किया, बट कलेक्शन में आपके पास सब कुछ है. नाउ एक्सेसिव कंटेंट विल एक्चुअली डीमोरलाइज यू. बहुत ज्यादा डीमोरलाइजेशन होता है कि आपको लगेगा कि इतनी सारी किताबें ले तो ली हैं, पढ़ा कुछ भी नहीं है, और ना पढ़ने का टाइम है ना पढ़ने की हिम्मत है. And you will start feeling FOMO also, that even if you finish one book or even if you finish two books, when the list or the compilation that you have is too big, you will never have a feeling of closure. You will never have a feeling of completion at all. कुछ भी लगेगा नहीं. तो आपको हमेशा लगेगा कि ये इसमें से कुछ छूटा हुआ है, ये किताब पढ़नी है, वो किताब पढ़नी है. You will end up being a content collector. Okay. Plus, it might create more confusion than bring clarity. Having more content is not a good thing. इट विल क्रिएट मोर कंफ्यूजन कि इसमें से पढ़ूं या उसमें से पढ़ूं इसका. और आप शुरुआत में ही 2-3 किताब को एक साथ लेके चल रहे हो, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली समराइज देम, मर्ज देम टुगेदर. So rather than being a content collector, you should ensure that you should start with one basic resource at a time. Once you have finished the basic resource, then buy another book or then take up any other source, rather than buying everything at the time. Market से किताबें गायब नहीं हो रही, और किताबें जल्दी लेने से आप जल्दी नहीं पढ़ पाओगे या ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे. Just make sure that you don't end up being a content collector. You are here to become a district collector. So one thing at a time. Start with the basic books. Once you're done with the books, then go for some other material. Don't fall into that trap or the race कि ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये भी डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से ले ले, वहां से ले ले, बहुत ज्यादा कंटेंट. It is not going to benefit you. It is going to demoralize you. It is going to create more confusion than the clarity. Okay, so save yourself from this kind of traps कि बहुत ज्यादा कंटेंट एक जगह पे चाहिए. And I have seen people, they make a folder of UPSC, उसमें बहुत सारे सब folders बना के they create some kind of content that might be in some terabytes, और एक पूरी हार्ड डिस्क भरी पड़ी है वीडियोस से और किताबों से और पीडीएफ से, आर्टिकल से. लेकिन उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, कितना पढ़ा है? Hardly few lectures, hardly few books. And when you have so many choices, you will never be able to maintain a schedule also. कि आपने अगर सोचा कि मेरे को कोई सब्जेक्ट खत्म करना है, एंड व्हेन यू हैव टेन्स ऑफ बुक्स फॉर दैट सब्जेक्ट, यू विल नेवर बी एबल टू रीड. एक बुक थोड़ी सी भी बोरिंग लगने लगी, देन यू थिंक दैट कि चलो ये किसी और से पढ़ते हैं, चलो ये किसी और से पढ़ते हैं. तो इवेंचुअली यू एंड अप डूइंग नथिंग. आपने इफेक्टिवली कुछ नहीं किया है. सो प्लीज save yourself from this trap of resource hoarding. Okay, don't do that.